So hello everyone, this is Team CSIOC, and we're sitting together and was putting our reflection towards year 2020. And when it's very little time left in year 2020, and we are moving forward to get into 2021. And each year we welcome the new year with full zeal of coming spirit, and we do that every year. But nobody knows, like the year, what year going to be bringing to us. This year we face many hardships, but thank God we are all alive, and we are sitting over here putting our reflection towards 2020. और ये हमारी टीम CSIOC तो जाके बड़ी हार्डशिप भी रही, लेकिन we did our work, like whatever we were supposed to do back during that time, and we did that. And we were just thinking and talking about 2020, what 2020 has put us tremendous pressure, and we felt it like we are stuck into something. Like, and by the grace of God, the vaccine is out, and we are moving forward with it, looking forward for a better future in the coming days. So, Sister Ingrid, you put a beautiful article, like in the couple of hours. You did that all stuff while we were talking about that, and you come up with a beautiful thinking about that. What do you say about 2020? देखिए, जब जैसे आपने कहा कि जब भी नया साल शुरू होता है तो हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके मुताबिक हम रेजोल्यूशंस भी बनाते हैं, मगर होना क्या है ये तो हमें नहीं पता। तो जब 2020 चढ़ा तो हम कहते हैं 2020 अच्छा साल होगा, इवन नंबर्स होंगे, चाइनीज कैलेंडर के मुताबिक ये लकी ईयर है, लाइक व्हाटएवर पीपल थॉट कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड ईयर। ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि भी इतनी भी तबाही दुनिया में मच जाएगी। मगर चले ये तो हमारे बस की बात नहीं है, मगर हम इंसान हैं और एज ह्यूमन बीइंग्स हमारी अच्छी बात ये है कि हम अडेप्टेबल हैं, और जब हम अडेप्टेबल हैं तो वी कैन ओवरकम एवरी डिफिकल्टी। और डिफिकल्टी ओवरकम करने के लिए हमें इंसान के होते हुए एक और चीज की भी जरूरत है, और वो है फेथ, बिलीफ, ऑप्टिमिज्म। अब जब ये चीजें हमारे साथ होंगी और ये कॉम्बिनेशन हमारी पर्सनालिटी में होगा तो हम किसी भी मुश्किल को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये ठीक है 2020 जो है। और मुझे चर्चिल की बहुत बात याद आती है, ये मास्टरमाइंड्स हैं अपने टाइम के। he was a great politician and he was a great strategist, military strategist. और उसने ये कहा था कि हर एक क्राइसिस में you learn something। तो हमने इस क्राइसिस में, कोविड क्राइसिस में बहुत कुछ सीखा है। So we want to keep 2020 a positive year as well, because it has taught us very good lessons in life, जो कि हम रोजाना की मसरूफियात में भूल चुके थे। So this is actually a learning curve for us this year, 2020. Thank you very much. And we, all of us, like, I'm so fortunate to have the friends and an organization like people full of experience around us, and people who have seen the lives starting from more than half a century, like they have the experience of this much time. So I'm sometimes I feel like how fortunate it is, like we got together and we think like positive all the time. Shah Sahab, it's a great asset to CSIOC, whereas Ataulas, both of them, Naveed Ataula and Lina Ataula, what a great personalities we do have around us. Shah Sahab, what do you say about 2020? Actually, I'm addressing both of you, Sister Runa and you, like how you guys take it, like in this age and 2020. Yes, for me, 2020 has been a year of challenges. It was never expected that it would turn out to be the way it did. And now, as we are ending this year and going to enter a new year, 2021, I pray that it will be a year where we will once again come to
normal life and are able to meet all the dear ones near and far. Wow. या ये बात है कि वाकई एक हाउसवाइफ के क्या मसाइल हैं, एक माँ के क्या थॉट्स हैं, एक ग्रैंड मदर के क्या थॉट्स हैं, एक ग्रैंडफादर के क्या थॉट्स हैं, एक फादर के क्या थॉट्स हैं, एक बच्चे के क्या थॉट्स हैं जो स्कूल पिछले 1 साल से नहीं जा रहा, वो ऑनलाइन बैठ के अपनी स्टडीज कर रहा है। और वो लोग जिनके अजीज इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो मजबूर था, वो फ्लाइट नहीं ले सका वहां जाने के लिए, बाप का फ्यूनरल करने के लिए नहीं जा सका। वो लोग जो अपने अजीज व अकारब से ऐसे दूर हो गए हैं, बड़ी बेचारगी की हालत है। अभी जैसे इंग्लैंड ने यही बात की और यही बात अभी दोहराई गई कि how helpless we feel, and all these feelings of helplessness produce stress, and then stress gives anxiety. और लेकिन जो उसमें उम्मीद की किरण है, जो उम्मीद का दामन है, वो इंसान नहीं छोड़ता। ये इंसान की बहुत बड़ी बहादुरी है कि वो इन हालात से लड़ सकता है, इन हालात का मुकाबला कर सकता है। ठीक है, millions of people have died, but there are much more than millions of people who are still surviving. Now that is a positive point, कि इंसान अपने आप को अडेप्ट करता चला जाता है, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जैसे हालात आते हैं उसके मुताबिक ढल जाता है। और तो वो जिंदगी का जो पहिया है वो चलता रहता है, जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है, आंसुओं में खुशियां मिलती रहती हैं। अभी तनवीर साहब आपने जो नज़म शेयर की वो जबरदस्त किस्म की थी कि कैसे उस साल में से हमने खुशियां ढूंढी और खुशियां निकली। तो हर गम में से, हर आंसुओं में से खुशी की किरणें भी निकलती हैं, और वो हमें ढूंढनी चाहिए, और उसके लिए बहुत से तरीके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और बातें इस पे होंगी। One more thing, like, isn't it we got way stronger in our faiths, like during that time, हम लोग मजीद अपने आप को stronger महसूस करते थे, and this all thanks goes to the our churches in the community, and they took it like a turn right away, virtual services and stuff like that, and all the congregations they took a very good care of them. So Naveed bhai, sister हाँ जी, कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ है। but I believe with the bad comes the good also, and we are going to win this war one day, this battle जहाँ पे हमने पूरे साल में इतनी मुश्किलात गुजारी, but we stayed connected. We stayed connected to the people, to our friends, our dear ones. They've been a phone call away. We were lucky in that situation. But yet not being able to meet our dear ones, to hug them, to greet them has been heartbreaking. And we have learned to remain calm and healthy. And so we hope that in 2021, things will be very different. And we have learned to live the hard way. And we have learned to distribute love and happiness and whatever help we can give to people, friends, or anyone who needs it. It's been a year of blessing also, because we have communicated with people otherwise we had forgotten at times, or they had forgotten us. But now everybody takes time to talk to one another and spread happiness, find out how they are, trying to put in all the love they can, which is very, very much needed. लोग कहते हैं ना कि हम बहुत क्लोज हो गए हैं फैमिली में। फैमिली में क्लोज तो हैं, फैमिली इकट्ठी तो है, बट बच्चों को तो लाइफ और चाहिए। हमने तो अपनी लाइफ बहुत गुजारी, हमने बहुत अच्छे टाइम्स देखे, अब बच्चों को आगे एडजस्ट करना है विद द न्यू टाइम्स एंड फाइंड entertainment, enjoyment, happiness, and love with one another.
What do you say about the spiritual growth in that time, like in the part of the churches of the community, like they come up with that virtual services and bringing out like not once in a week, some churches, I'm glad they came up with different services throughout the week, like we've been able to get the service instead of going to the church, the service was coming to us at Hartford. So what do you say about that? आज भी अभी मैंने स्क्रीन पे वो पिक्चर डालनी आज ही सीखी है. It was my first effort. Big thing. Every downturn has an upturn, right? So usme ye, like you saying, did the churches do the job? Situation itni unpredictable or itni unexpected or itni strange thi that people had to scramble how to deal with it. And so they did their best. But then you can always say, okay, under the situation, under what we were all going through, more was less. Yes. You But know, कलाम में भी लिखा है कि हर बुराई में से अच्छाई निकलती है. बिल्कुल. ये जितना पेंडेमिक हमें एक दूसरे से दूर किए जा रहा है, उतना ही हमें नजदीक भी ला रहा है. That's इन right. अ वे कि अब हम जूम के थ्रू आपस में बात कर लेते हैं, हम एक दूसरे को देख लेते हैं. बिल्कुल. और ये कहते हैं कि जी नहीं जी 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे को ग्रीट नहीं कर सकते, जो कि बड़ा मुश्किल काम है. बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हमें हमेशा यही होता है कि यार हम एक दूसरे को हग करें, हम एक दूसरे को गले मिलें, लेकिन ये पेंडेमिक की वजह से ये बहुत मुश्किल हो गया था. लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसने हमें फिर से यूनाइट कर दिया. We are together once again. The community organizations, they come out of the shell and they started helping out the people. And what do you say? Like it's another positive sign in the pandemic. Like people came out of the shell and started at least helping out the people. तनवीर भाई, मैं जरा थोड़ा सा पीछे चला जाऊंगा. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से देखें कि एक रैट रेस शुरू हो गई थी. People, they wanted to show their superiority over the others. किसी ने कहा जी हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स निकाल लिए, किसी ने कहा हमने ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल निकाल लिए, किसी ने एयर टू ग्राउंड मिसाइल निकाल लिए, और ये भी कहना शुरू कर दिया कि हम एक बटन प्रेस करेंगे और फलानी जगह पे जाके तबाही मच जाएगी, सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ. चाइना या वहां से एक छोटा सा वायरस निकला जिसने एक मिसाइल भी नहीं फायर किया, सिर्फ एक छोटा सा वो वायरस दिया और सारी दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले लिया और हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं. We try to greet each other, we want to greet each other, लेकिन क्या करें, ये पेंडेमिक हमें दूर. अब हमको ये सोचना है कि 2021 में पॉजिटिवली हम इसको कैसे ले सकते हैं. How can we greet each other? How can we stay together? Or find new ways and means to be together and greet each other and help each other and share our joys and sorrows with each other. One thing is for sure, life has changed. The world has changed. Yes. How it has changed, again, it's a mix of, yes, some things are very good for us. Sometimes some things we are going to miss a lot, but they are not going to come back. So we have to prepare ourselves for the change. And I think, like I said, as human beings, we are all capable of making changes and adapting to them. Just like after 9/11, the world changed, there were a lot of changes happened, everybody adjusted to that. And now in 2021, we are going to look at a big change in our daily lives. Things are going to be very different.
And people our age are going to find it very challenging because everything is computerized. It's Very true. technology. And I think this year was good for the older generation because we learned a lot of technology just to keep ourselves in touch with each other. So it worked out really well for us. So I don't think we should be too grumbling too much about 2020 cutting us off, because we actually pushed ourselves into the new century by learning how to be more IT savvy. Yeah, true. No? Very true. That's the feeling. And also in another way, like we took something, like most of the stuff, like took it for granted, like in the previous years. ये जो सबसे बड़ी हमारे पास एक ability थी कि हम एक दूसरे को मिलते थे, बैठते थे, time को enjoy करते थे. We never thanked for that. So we understand this thing, like हमारे से थोड़ी सी आज़ादी वापस ली गई तो हमारा क्या हाल हो गया. So my resolution, like to getting into 2021 with the heart full of thanks, like please God, give us that time back. So as a on a faith-based thing, like what I would ask the God, please give us that time back, because we got everything. We are blessed people over here. बस ख्वाहिशें तो इतनी है कि वो पूरी नहीं हो सकती सारी की सारी, लेकिन एटलीस्ट वो जिंदगी का मजा जो मिलजुल के है वो इस तरह अलग-अलग ज़ूम पे नहीं है. ये मेरी थॉट है. ये तो for sure. It's sad. See, when the churches were built, people were asked to go to church and people wouldn't go to church. Churches were empty. And now churches are closed and everybody wants to go to church. So I think this whole visual setup and that longing to be with God, to be in the church, to be with Christ has increased in us. अब हमारे दिल चाहता है कि हम चर्च जाएं. To be with people, to worship with people. इकट्ठे, वो हमने बचपन से सीखा कि हम इकट्ठे बैठ के दुआ करें. इकट्ठे बैठ के करें. इबादत इकट्ठी की ज्यादा वो ताकत है. तो अब हमारा जी चाहता है कि हम सब चर्चेस में जाएं. और उम्मीद है कि नए साल में सब कुछ खुल जाएगा और हमें बीच में से. So what's going on at CSIOC? We stood up, like even during the pandemic, we tried our best to get connected with the community seniors, and we somehow, to some extent, we were able and we got successful in that. And but it's not the number that we want to approach. So usme I want to appreciate the services of our team, and especially Mumtaz Shah Sahab. Like he did a marvelous job in teaching so many people about setup. So Shah Sahab, what do you say about all the seniors' involvement into the community and how we should proceed forward with that? Well, this is everybody knows seniors are a very important part of our community, and because they carry loads of experiences, life experiences, and they are, say, the old saying is the old wise people. So they carry wisdom, and the community has to take care of them. But how much the community takes care, well, that's another question. Now, CSIOC has been working for their in support of the seniors in many ways, and there was a project we did in which we initiated a quiz program, which went very successfully for the involvement of seniors in the community activities. तो हम सीनियर्स के लिए CSIOC में बहुत ज़्यादा काम करते रहे हैं और फिर इनके साथ इन टच रहे हैं, इनके साथ कांटेक्ट बना के रखा है, इनके साथ बातें होती रही हैं, इनको जूम टेक्नोलॉजी, इनको व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी, इनको सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट करना, ये सारा CSIOC ने की टीम ने बहुत बड़ा काम किया है. और चर्च का एक प्रोजेक्ट है जो कि सीनियर्स के बारे में है,
और वो इट्स स्पेशली सीनियर्स प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम में सीनियर्स के लिए काम हो रहा है। हालांकि रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन जूम टेक्नोलॉजी के ज़रिए और बाकी जो मीडिया टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करते हुए सीनियर्स को अप्रोच किया गया, सीनियर से कांटेक्ट किया गया, सीनियर्स को इन्वॉल्व किया गया, और चर्च ने और CSIOC ने इन कोलैबोरेशन काफ़ी काम इसमें किया, गॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। और उन यूथ से मेरी दरख्वास्त है, बल्कि हम सब CSIOC वालों की ये उनसे रिक्वेस्ट है कि the youth should get themselves involved. They should take care of their seniors. They should teach them how to use the technology and how they should get connected. तो अगर वो youth हमसे coordinate करें, हमसे मिलें, हमसे बात करें, हम उन्हें और ज़्यादा information, specialized information provide करेंगे। और Very good point, Shah Saab. This is what I encourage our youngsters in the community. You just do one thing, just get your seniors in touch with the Zoom and make them a little bit expert on the Zoom. Rest of the stuff, CSIOC will take care of that. So at the same note, when we were talking about the CSIOC's accomplishment towards the seniors, what do you say, Sister Ingrid, about the other accomplishments, what CSIOC was doing? हालांकि pandemic में थे, हम लोग डरे हुए थे, we kept going on doing the things which are required, बल्कि essential ज़रूरत बन गई थी हमारी कि वो करना ही करना है। देखिए, ये तो पैंडेमिक ग्लोबल था और द नीड वाज ग्लोबल, और हमारी टीम ने यही कोशिश की टू रीच आउट ग्लोबली, even though we had a lot of limitations, we had a lot of challenges, but the world didn't stop revolving. It was going on, life was going on. So CSIOC reached out internationally, dealing with cases, helping individual people. आप सबको पता है कि क्या-क्या cases were very much in the news. We don't have to name them, but we were there for them. We supported them in whatever way we could. A lot of things that we do as a team, we do not publish them, we do not broadcast them. We just do what we need to do and pray that God has accepted our effort and things will move in the right direction. So a lot of other organizations in our community have also been working hard during the pandemic, and we appreciate that. But coming a little bit to seniors, because I'm a senior myself, I just want to say that seniors, it is a good idea to deliver groceries to them, to make sure that the daily needs are done, that they have everything. But I think seniors की जो सबसे बड़ी हमारी community की problem है, they feel cut off. They feel isolated. They feel that they are a little bit behind. So they've given up trying to keep pace with the times. और ये हमारी यंग जनरेशन की आई थिंक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सीनियर्स को अपने साथ लेके चलें, जैसे दूसरी कम्युनिटीज में है. अगर आप दूसरी कम्युनिटी सेंटर्स को देखें, उनकी लाइफ इज देयर सीनियर्स, क्योंकि they are full of experience and they know a lot and they can teach us a lot. So यही pandemic में हमारी dilemma रहा है कि हम seniors को reach out करें. Internationally जो cases हैं जो बहुत ही ज़रूरतमंद हैं और all over the world, we've reached out to them. चाहे पाकिस्तान हो, चाहे थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, जिस किसी ने भी हमसे फरियाद की है, हमारे दरवाजे पे खटखटाया है, we have tried कि वो खाली हाथ ना लौटे. And we thank God कि even within our limited resources, खुदा ने हमें इस्तेमाल किया है. उसी के जलाल हो और उसी के नाम से हम काम करते हैं. That's a very good statement you just gave out on behalf of CSIOC. Sister Ingrid is the Communication Director of CSIOC, and Mumtaz Shah Saab is the Vice Chair of this organization. We have our Director of Finance,
Professor Naveed Ataullah, and the executive members like who took good care of our cake making thing this year. Yes. Sister Runa, we CSIOC is very much thankful, not only us, lots of people. I received lots of messages from the people and the way they admire the cakes during this time. And we felt so proud to announce that the all the money we make out of it, and we helped out the people who were really in a need. And we feel so encouraged and blessed by doing that. And I would like to thank Sister Runa and Sister Lena. You guys are the gems in CSIOC. एक बात तनवीर भाई कि ये जो हमने जूम किया अपना बेकिंग सेशन, उसमें हमें इतनी खुशी हुई कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल जॉइंड आउट. हमारी कम्युनिटी के सीनियर मोस्ट person, Mr. Yunus Wahab, he was there because we taught him how to use Zoom. We taught him how to participate with us, and he thoroughly enjoyed it. So we were so happy to have the senior most person of our community join us in that Zoom session. And at this point, I would say, like, the credit goes to Mumtaz Shah Sahab, like, he made his mind Bilkul. participate actively into that program. And this is what we think about, like, at CSIOC. हर वक्त की अपनी देहाती और वो जिंदगी वो याद करें कि जब ना टेलीफोन होता था ना टीवी होता था, लेकिन अब सारी वो है. तो दुनिया का निज़ाम जैसे कहा गया ना, वक्त के साथ हर चीज बदलती है, तो माहौल बदल गया है, जरूरियात बदल गई हैं, हमें उनके साथ अडेप्ट करना है, हमने नए तरीके सीखने हैं. हर वक्त का अपना एक मजा है, तो वो हमने एंजॉय करना है और जिंदगी के साथ साथ चलना है और खुश रहना है, गमों को भुलाना है, बहादुरी से मुकाबला करना है. खौफ आता है, लेकिन खौफ के मुकाबले के भी तरीके हैं. इतनी ज्यादा नई ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, इतनी ज्यादा थेरेपीज आ गई हैं, इतनी ज्यादा मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस आ गई हैं. हमें सबके साथ चलना है. और देखिए, ये तो बाइबल में भी हमारे पास बड़ी अच्छी मिसाल है. जब मूसा ने अपनी कौम को इजिप्ट से लेके निकला था, उन पे कितनी मुश्किलात थी, सालों साल तकलीफें आई, फिर उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो सेटल हुए मुल्कों में जाके और बसे, और फिर एक नई दुनिया शुरू हुई ना. तो ये तो एक किस्म का वही हम देख रहे हैं फिर से कि खुदा अपने लोगों को निकाल रहा है और एक जिंदगी का नया तौर तरीका हमें देगा कि हमें उसके मुताबिक अब आगे जिंदगी गुजारनी है. और हमें वो समझनी पड़ेगी, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. और उस जिंदगी में मुझे नजर आता है कि खुदा चाहता है बहुत ज्यादा प्यार बांटे, बहुत ज्यादा, और एक दूसरे की ख्याल रखेंगे, क्योंकि दुनिया तो कम होती जा रही है, तो हमें बहुत ज्यादा एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी. At the same note, what I would like to say in the end, like we all are looking forward to 2021, and we feel like it's going to be a very good year. But as we were kids, and we always been told from our parents, okay, be good and have good. तो हमें भी थोड़ा सा अपनी लाइफ को चेंज करना है. एक्स्ट्रा गुड विद ऑल द पीपल. शुक्र करना चाहिए. हम कायनात का शुक्र करें, हम नेचर का शुक्र करें, हम खुदा का शुक्र करें कि 2020 में से वो हमें बहुत अच्छे अंदाज में लेकर आया और हमें इस काबिल बनाया कि हम 2021 को में दाखिल हो सकें और एंजॉय कर सकें. And we thank all the community, all the people who took care of the community. And in that time, people are calling each other, taking care of them, like very nicely. But whatever is going to be happening, it's going to be happening in the world. And we can see, like, the superpowers, they couldn't do anything. It's only God who can bring a change to us. So I wish everyone, once again, prosperity,
and good wishes for 2021. Yes. 1, 2, Thank 3. you. Happy Thank New Year. Happy New Year. Happy New Year.